हमने मैग्नेट स्टार्ट किया था जी. पीपल ऑनलाइन, आदिया, और मुझे एक बच्चे का और है, आई डोंट नो विच वन ऑफ you have sent me the test, otherwise Bhavya, she has sent me that. Sadiq, Abdullah, Abdullah Khawa, Adil, आपका आया हुआ था, ठीक है, उसका नाम नहीं था, मेरे माफ कर, तो आपको नहीं दिया होगा, अरुबा का भी आया होगा, नहीं आप फॉर्मूला वगैरह लेक्चर को थर्सडे वाला बाकी क्लास को मैं रोक नहीं सकता हूँ, आप एब्सेंट होगा. ऑलराइट, सो प्लीज people जिन लोगों ने टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया था, it's there in the group, download that thing and do it. और अगर आपको जरूरत होगी तो tomorrow we can discuss it all. ठीक है, जिन बच्चों ने आज टेस्ट नहीं देखा हुआ या नहीं दिया था for any good reason, they can go through it and we can discuss it tomorrow if you require that. All right, okay. So we just started with the magnets. Magnets, they are the special materials which attract certain objects and they have certain properties. We discussed this thing on the last day. So on the basis of magnetic effect, we have divided matter into three classes. We have ferromagnetic, yeah, and diamagnetic substances. What are the ferromagnetic materials? It's just a quick review ताकि जो लोग absent थे वो हमारे साथ आज शामिल हो जाए. जी, Hadia. They cannot be magnetized and they show a little weak response to the magnets. Excellent. They can be magnetized and they show, yes, हम इसको रिस्पॉन्स कर लेते हैं. ओके, फ्रैक्शन लिखा देते हैं towards magnets. Sadiq, what are paramagnetics? They cannot be magnetized. They cannot be magnetized. Magnetized means we cannot turn them into magnets, right? ऐसे ही है ना? So weak response to the magnet. How do you spell magnet? That makes you easy. Okay. They cannot be magnetized. And they show a visual resistance. Now, attraction towards ठीक हो गया जी. बेटा आपका नाम Heather, can you figure out from these two things and these two properties what can be the diamagnetic substances? Can we magnetize them, the diamagnetic things? No. Do they show any attraction towards magnets? No. That's why we call them diamagnetic. All right. Cannot be turned into magnets and show no response.
जल्दी से इसलिए करवा दें कि तुम लोगों का नुकसान नहीं हो, जो लोग एब्सेंट थे। सर ये जो एब्सेंट हो रहे हैं इनके तरफ घर कॉलें करें और जरा पूछें इनकी तबीयतें कैसी थी उसको। ओके, एग्जाम्पल्स फेरोमैग्नेटिक कौन से मटेरियल्स होंगे? आयरन, शाबाश, Steel, ओके, nickel, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, ये चार मटेरियल। ये कैसे मटेरियल? वी कैन टर्न देम इनटू मैग्नेट्स। आयरन मैग्नेट बन जाता है ना, और आयरन मैग्नेट को रिस्पॉन्स भी शो करता है। इसी तरह से सेम इज द केस विद स्टील, निकल, कोबाल्ट एज वेल। चारों पर ठीक हो गया जी। अब्दुल्ला, एनी क्वेश्चन? इसकी क्या एग्जाम्पल होगी? ओनली एल्यूमिनियम। एक ही है दुनिया में एल्यूमिनियम, और बाकी जितने चीजें दे आर डायमैग्नेटिक। हाँ जी, वुड प्लास्टिक को छोड़ो, बताओ मुझे कॉपर। कैन वी टर्न कॉपर इनटू मैग्नेट? यस और नो? पक्का? सिल्वर, गोल्ड, बाकी की मेटल्स, ठीक है। एंड सादे के फेवरेट वुड, रबर, और क्या था सादे? glass. प्लास्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनी क्वेश्चंस? जी, और सो ये उस दिन हमने बात की थी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी विच आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज नाउ, कि एक सिंपल पीस ऑफ आयरन, लेट्स सपोज दिस इज सिंपल पीस ऑफ आयरन, और ये आयरन मैग्नेट है। दोनों में फर्क क्या है? कोई केमिकल कंपोजिशन का फर्क है दोनों में। दिस इज सिंपल पीस ऑफ आयरन and this is magnet. An iron turned into a magnet. So what is the difference between the two? Oh, yes, yes, good boy. Anji? Arrangement of atoms. Dipole, yes. Dipole कैसे हो जाते हैं? अब बता ही देता हूँ, तुम लोगों ने इतनी वो उससे कहा है। जी, ऑनलाइन लिखो, जरूरत तो नहीं है बताने की है। अमार, बख्तियार, फातिमा, and rest of you. Ali is also there. जी, देखो किसी भी इसमें मेटल में एटम्स इस तरह से होते हैं ना, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, कितना इस तरह से करके बनाओ। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लिखा होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव ड्यू टू द प्रोटॉन, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, दे कैरी नेगेटिव चार्ज एंड, और इसी तरह से आउटर ऑर्बिट्स। So overall atom neutral है, but electrons will carry negative charge, nucleus contains positive। अब इसकी शेप इस तरह से होती है। अगर इसकी शेप ऐसी हो जाए, this is the nucleus, and ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका ऑर्बिट थोड़ा इलेक्ट्रिकल हो जाए, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन टुवर्ड्स राइट साइड तरफ ज्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियस की वजह से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में लेफ्ट साइड तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो वी कैन से कि पार्शियली यहां पर, partially because of the nucleus this side turns into polar, like positive pole, और ये इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की वजह से पार्शियल नेगेटिव है। तो सेम एटम पर सब फिस गया बेचारा, ठीक है। दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड डायपोल अरेंजमेंट। जब भी किसी भी चीज में डायपोल
एटम्स की अरेंजमेंट हो जाएगी, इस तरह से पार्शियल पोल्स बन जाएंगे, that thing will start attracting the other things. ठीक है, it will start attracting ferromagnetic and paramagnetic substances. तो ये क्या बन जाएगी? मैग्नेट. ठीक है, so this arrangement या this structure of atom can be created in ferromagnetic substances only. यानी आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट में हम वो वैसा करते और उससे वो मैग्नेट बन जाते हैं. जब आप इसको कुछ करेंगे ऐसे दो चार थप्पड़ लगाएंगे, वो दोबारा ऐसा एटम हो जाएगा. दैट मीन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया? चला गया. turns into a simple piece of iron again. All right, ठीक है. शाबाश. Any questions? यहाँ तक समझ आ रहा है? Easy peasy. Magnets और magnetism मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म, इंसान और इंसानियत अलग अलग चीजें. क्या ख्याल है? तो बड़ा ही नहीं बच्चा है, इसने इसका शोर पसंद किया. इट्स द सेम. ठीक है, मैग्नेट्स में हम सिर्फ मैग्नेट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और जो चैप्टर मैग्नेटिज्म व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ, उसमें हम पूरा मैग्नेट्स का इफेक्ट और उनके लॉस वगैरह सारा कुछ पढ़े. ठीक है, कंप्लीट हो गया. मैग्नेट समझ में आ गया. अब मैग्नेट का क्या होता है? दो पोल्स होते हैं. कौन कौन से? नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. व्हाट इफ आई ब्रिंग अनदर मैग्नेट नियर टू इट? North pole facing the south. What is expected of it? They will attract. Why? Question is why? Oh, very fine, very good. But why? जी बेटा. All right. अच्छा, अब यहां पर उसकी चार्जेस की बात है. ठीक है, उन चार्जेस की स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से मैग्नेट्स से आई मीन मेटल्स से आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन बिहेवियर, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट जब क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, these two magnets they are either going to attract or repel. Similar poles they repel. Now magnetic field उसकी तो हमने बात की थी क्या होता है, right? जैसे क्रिकेट फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है, in the same way we have magnetic field, the field or space around which the magnetic effect can be felt. फुटबॉल फील्ड पे क्या होता है? आप फुटबॉल खेलते हो, उसके बाहर जाकर 15 गोल भी कर दो तो वो गोल तो नहीं माने जाएंगे ना. ठीक है, तो फील्ड के अंदर in the same way the space or the region around this magnet in which we can feel the effect of this magnet, that is called magnetic field. Question again here. Magnetic field कैसे क्यों क्रिएट होता है? वो क्या चीजें हैं जो magnetic field को क्रिएट करती हैं? You might have considered some magnets, they are very strong irrespective of their size. Even they are very small but they are very strong magnets. Boys, you might have played with them, right? And there are certain magnets which are quite big, but their magnetic effect is very weak. So, what is that thing which is causing magnets, strong magnets or weak magnets? Magnetic field. Yeah, magnetic and magnetic field. It is all due to, yeah, we call them magnetic lines of force. Okay, magnetic lines of force. Earlier, the thing which you were considering as charges, they are actually magnetic lines of force. Now, there are certain characteristics, properties of these magnetic lines. These magnetic lines, they always come, you move from North Pole and they move towards South Pole.
All right. They always, their direction is from, they move from North Pole towards South Pole. They means magnetic lines of force. They always move, they come out from North Pole towards South Pole. Right? So we have got like two poles here. So magnetic lines are just coming out from the north, and they will seek, they will look for the South Pole, right? Heather, Bakhtiar, and Amar, and rest of you. Now, if I have South Pole here, North Pole here, these magnetic lines, they will come out, right? They will move from this North Pole, they will seek South Pole. So there's another South Pole closer to them. Isn't it easier for them, instead of going to this side, they will straight away go to it, this South Pole which is in front of them, right? So all the lines going straight into this pole, which is causing attraction, right? So this is the reason why poles, they attract or repel. Now, this is quite खींचू diagram, बड़ी बड़ी बनाऊं ताकि आपको सही समझ आए. Let's suppose we have two north poles. Magnetic lines coming out of these two poles, and they are looking for, they want it to go towards south, right? They are placed here. What if I just bring them closer? What is going to happen? These magnetic lines, they will try to repel. Why? Because they, magnetic lines of force never intersect each other. Intersection means, और से देखना, ये. I should have drawn it in red so that you can. This red line, it is intersecting the other rays. It never happens in a magnet. These magnetic lines, they never intersect each other. Never. Okay? Even if you forcefully bring them very close to each other, they will become like this. Let's suppose we have these two poles extremely close together over here. They will become like this. And because of this arrangement, they will exert a lot of force on the other magnet. Okay? And so on. And even then, they are not going to intersect like this anyway. They will go straight. Okay? So because of this thing, we have repulsion. So similar poles repel, whereas opposite poles
attract each other. This is called law of magnetism. This is a law. Pakistan में, America में, Australia में, everywhere. Similar poles, they will always repel each other. Okay, magnetic lines, they never intersect, never. Number 3, magnetic lines can easily, if we have air and iron, what do you expect? Magnetic lines can easily pass through which material? Air or iron? Air. Okay. Yes. Yeah. Yes. No. They can easily pass through iron. Why? They can easily, if they have a choice, like if I place iron ring and we have like north and south poles. North and south pole. You know, the magnetic lines, they will go straight from the north to the south like this. Now, if we have an iron ring in between magnetic lines, will go like this. And we'll have no magnetic lines over here, right in the center. No magnetic lines. Even if you just place a compass here, a compass needle. You know a compass needle? We use that compass needle for compass needle. याद आ रही? It is used for navigation. आप सबको अगर हम किसी ऐसी जगह छोड़ें where you are unable to determine that the direction east, west, north, south, then we use compass needle for navigation. ऐसे ही है ना? So if you just place that compass needle over here, it is just going to indicate north pole, earth the north. So इस चीज को क्या कहते हैं? हमने क्या क्रिएट किए? We have created shield against magnetic lines. Earth की magnetic lines हैं. Earth behaves like a magnet. Yes or no? Yes. भाई उसके कौन से पोल्स हैं? ईस्ट एंड वेस्ट अर्थ के नॉर्थ एंड और मैग्नेट के कौन से पोल? कुछ सिमिलरिटी है ना दोनों. सो अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट विद द सेम पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, तो अर्थ इज मैग्नेट. So magnetic field is all around us. Magnetic lines of forces, they are all around us. Can you tell me, ये जो विंटर में साइबेरियन बर्ड्स आते हैं वो साइबेरिया से, नॉर्दर्न पोल से टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ये सिंध के इलाके में जहाँ पे ठट्ठा, मकली, जंपीर, मंशर झील, केंजर झील, यहाँ पे आते हैं सारे बर्ड्स. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते. तो ये नेविगेट कैसे करते हैं कि पाकिस्तान का ये सिंध का इलाका किस तरफ है? किसी उल्टी तरफ भी तो जा सकते हैं. साउथ की तरफ आते हैं. क्यों आते हैं बेटा साउथ की तरफ? उन्होंने वो जीपीएस लगाया होता है ऐसा करके अपने गूगल मैप से देख रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? शाबाश अब्दुल्ला. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं उनका ब्रेन उनको डिटेक्ट करके उन्हीं लाइंस के ऊपर ट्रैवल करते हैं वो बर्ड्स. ऑलराइट, तो ये गॉड गिफ्टेड उनकी है चीज.
They travel right on the magnetic lines of the Earth. So at times, हमारे पास we have certain sensitive devices which are affected by Earth's magnetic field, and we want to protect them. What do? You simply we just place them in the shield of iron. ठीक है? ये जो बैटल केसिंग होती है अक्सर आपकी चीजों की कंप्यूटर या और चीजें इनसे क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता राइट so this is called shielding effect we have created here shielding effect a shield is created here this is called shielding effect we have protected this part this area from the magnetic lines ठीक है समझ आ रही है बातें कि नहीं मुश्किल है आ रही है ओके गुड ये बेटा 3 प्रॉपर्टीज इनकी याद रखनी है ठीक है ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दे ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल outside the magnet ये भी लिखना है साथ में बेटा हिबा outside the magnet तो ये नॉर्थ से निकल रही है what about inside as they are moving into the magnet from the south pole what do you expect they are just stopping here or they are traveling towards the north yes they are traveling towards the north so inside the magnet they always travel from south to north so they make a complete cycle and so on. All right. Inside the magnet, they move from south to north. All right. So it's a complete cycle of these magnetic lines of force. So this is their direction. Sir, the shielding effect is created by a metal? By a ring of iron. So it will not be attracted by the magnets. Yes, it can be, but कोई जरूरी नहीं कि you place the magnet so close, right? We have, I was just giving you an example. We have the magnetic field of Earth all around us, right? So just to sometimes we have very sensitive instruments which we need to protect from the magnetic lines of force. So we just place a ring around them or we make the iron casing of those devices which protects them from the magnetic lines of force. Okay? Okay, sir. Now, very good question asked by Fatma that this ring should be of any metal. Can I make it from like a steel? Cobalt or nickel, they are also ferromagnetic. What do you expect? बना लें कि रहने दें? बना सकते हैं, but it is not that efficient. Iron has the property. Iron is called in like technical terms में we call iron as soft iron. Soft iron. And we have steel. Soft iron is not like very soft, talky either. It is simple iron, right? So soft iron it can be easily magnetized, can easily be magnetized, and demagnetized.
or steel. Steel turns into cannot be like easily. We require some time to make it magnet. Steel actually turns into a permanent magnet. Just note it down and then I will just explain it to you. Just write it down. Soft iron, steel, their uses are different. Let's suppose you have the steel mills, okay, and you have to pick up those iron bars and billets, right? So we use electromagnetic crane there. Electromagnetic crane is like you turn on the current and that disc, it turns into a very strong magnet. Okay? So usually we just use this electromagnetic crane in junk yards, in steel mills, etc., just to lift up those iron pieces. Okay? So you just turn the current on and it turns into electromagnet. So you just pick up the things, wherever you have to drop them, it turns off the current. Okay? And it demagnetizes. What if we are using a steel disc instead of iron? What's going to happen? Would demagnetize the things, I mean the iron pieces will remain attached to it. Once you will just subtract them and then it will remain there forever. So we cannot use permanent magnets over there. Okay? So material is very important. Choice of material is important. So soft iron, it turns into a very strong magnet and can easily be demagnetized. Whereas steel turns into a magnet, not that strong as like iron, but it turns permanently magnet. Okay? So अपने words में you can write the explanation for it. The iron golden. Iron, yes, its magnetic effect remains for some time. Voice usually, you got the sound system at home, the speakers, they got a very strong magnet at the back. Have you ever seen that? Okay? You think they are made up of iron or steel? Steel. Because they are permanent magnets, right? So wherever we require permanent magnets like this bar magnet, we are going to make it with, we are going to make it of iron or steel? Steel. That compass needle which you will require in the desert. अगर वो iron की बना के दे दें हम, फंस जाएंगे ना? Yeah. Okay. बस आज का last question and then you can. Question is, अर्थ का नॉर्थ पोल किस तरफ है? आ गई ना तुम्हें समझ? Good. हाँ. If I just have this compass needle, तो उसमें ये जो बीच में होता है pointer, it always points towards. Yeah, it always indicates towards north. और ये क्या होता है? खुद ना नॉर्थ पोल होता है. ये खुद भी नॉर्थ पोल होता है और ये अर्थ के कौन से पोल को शो करता है? नॉर्थ पोल. उसकी मैं आपको I can give you another example. If we hang a bar magnet with a thread, let's suppose this is a thread and we just hang a bar magnet. This is north, this is south. इसको आप हल्का सा वो करो, twist. ठीक है? ऐसे घुमाओ. So gradually it will adjust itself in this direction, north towards the Earth's north pole and south towards the Earth's south pole. अभी तो हमने पढ़ा था ये
Similar poles attract or repel? Thank you very much. And they are attracting. Why it's so? चुप करो, बहुत बार जी. People online, Usman and Khadija. Why? Why is it so? जी हैदर, सादिया. It means कि कुछ गड़बड़ है. जो अर्थ का नॉर्थ है ना, वो एक्चुअल में मैग्नेट का क्या था? साउथ. लेकिन हमने बड़े पुराने जमाने से we started saying it north pole, north pole, north pole, and this magnet बाद में कहीं डिस्कवर हुआ, उसकी पोलैरिटी बाद में डिस्कवर हुई, तब हमें पता चला ओए हम तो उल्टा कह रहे हैं. ठीक है, so we couldn't change the name. So Earth's north pole is called geographic north pole. हमने एक और नाम ऐड कर दिया. क्या कहते हैं हम उसको? Not that magnetic north pole, it is geographic north pole, which is actually magnet का south pole. समझ गए हो? चलो शाबाश. Thank you very much for today. Khuda Hafiz. Do you want any questions? Please ask me. Otherwise, we are done with the session. Please do take that test, and if you require to do the review, we will do it tomorrow for like 5-10 minutes. Quick. मैंने ग्रुप में सेंड कर दी. You can see your marks there. Okay बेटा. खुदा हाफिज. Officer. हाफिज बेटा.